we will talk about the sign convention. We know the rule to draw the ray diagram of an object which is at a different distance from the mirror of concave mirror, convex mirror or a plane mirror. Now we are able to draw the ray diagram because we know the three basic rules for drawing ray diagram. Right now we will talk about the sign convention. It is convenient, it is considered that we should have a sign convention. We have different distances from the mirror, and for that distances we fix some sign. This is positive distance, this is negative distance. So that sign convention is followed from new Cartesian sign convention. So we should follow one have to follow new Cartesian sign convention. And you know the new Cartesian sign convention because you know the axis is x and y axis. This is the origin from the right side of the origin. This is positive x section, negative x, positive y, negative y. This is all about. This is and the sign convention for spherical mirror or for mirror for image formation by the mirror is same as this. So all the distance is measured from the pole. Here all the distances are measured from the origin where the two axes intersect. Now here all the distances are measured from the pole. This is the first rule or first convention. Now the distance from the distance of the distance from the pole which is covered from pole. Sorry, all the distances are covered from pole. Now the distance, actually video button is paused because call is coming. So I have taught everything again. So okay, actually where we was, okay, we were discussing sign convention. So this is the sign convention. The distance which is upward from the principal axis, perpendicular to the principal axis, and upward, that distance is measured as positive distance, and the distance from the principal axis downward and which are perpendicular. Actually distances are always perpendicular to the line, so we should not mention a perpendicular thing. The distance downward to the principal axis is negative, right? So you know the Cartesian sign convention. So now we know the image formation. For a fixed focal length of a mirror, spherical mirror, we find that as we move the object in front of the mirror, that means as we change the distance of the image, distance of the object, we find that the distance of the image is also changes. The nature of the image also changes. The distance of the object is denoted as small u, and the distance of the image is denoted as small v. So as u changes, v changes. So there are some cases where we understand the nature of the image, the position of the image, and the size of the image as we change the distance of the object from the mirror. So the first thing is object at infinity. When object is at infinity, it means it is at a greater distance, a very big distance, and we know that from
we consider from infinity rays are parallel. Like sun is at a very far distance from us, so the rays coming from the sun is actually parallel to each other. So the rays coming from the infinity are parallel to each other, and after reflection they meet at focal point, at focus. So the image formation is at focus. Nature, because they actually meet at point, so nature is real at focus. Real, nature real, inverted, every real image is inverted respected to the object. This is the position of the image, this is the nature, and size of the object is extremely small, right? Extremely small. Now we move to the second case, object beyond the center of curvature. So when the object is placed at beyond the center of curvature, then there are two light rays. One is parallel to the principal axis, and after reflection it goes from principal focus, and another light ray going from principal focus, after reflection it is parallel to the principal axis. So these two reflected light rays meet at point B dash. So the image is real inverted. Nature is real and inverted. Position between center of curvature and focus. Between center of curvature and focus. Size is smaller than the size of the object. Right? I'm not discussing or explaining this in more detail because this is very simple. Object between center of curvature and focus. So the object is placed, when object is placed between center of curvature and focus, then there are two light rays. We only draw two light rays. We can draw another light ray which is incident on pole, and after reflection it goes like this, because this is angle I, then this is angle R. The angle which makes principal axis with incident ray, the same angle is between reflected ray and the principal axis. So all the three light rays after reflection meet at B dash. So we need not to draw third light ray, right? Because we need only two light rays to be intersected, right? ट्रक वाले बहुत आवाज कर रहे हैं, दिमाग खराब है. चलिए जल्दी. अब बताते हैं, ठीक है. चलो फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा गया, तो यहाँ पे देख लो बी डैश में मिल रहे हैं, तो ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनना. एक्चुअली तीसरा मुझे बताना था, फोर्थ बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, बाद में तीसरा बता देंगे, ठीक है. क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को पहले रखे थे, अब की बारी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने की, फिर अगली बारी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर रखने की, अगली बारी होगी फोकस पर रखने की, फिर अगली बारी होगी फोकस और पोल के बीच रखने की. बिल्कुल सिंपल सा है. पहले इन्फिनिटी, फिर सेंटर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट फोकस, बिटवीन फोकस एंड पोल. ऐसे होगा, इसमें 6 केस बन जाएंगे, ठीक है. तो इस वाले केस में देख लेते हैं. इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन सेंटर ऑफ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड है, बिगर इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. साइज, इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट साइज से बड़ी है. इस वाले केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो थोड़ा सा तेज बोल रहे हो तो थोड़ा समझ लेना, ठीक है. बहुत सिंपल सी चीज है. सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखेंगे अगर हम ऑब्जेक्ट, तो देखो एक लाइट रे ऐसे गई पैरेलल लाइट रे कहाँ जाती है? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में जाती है, फोकस वाली रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, बी डैश में मिलेगी. तो ए डैश बी डैश, वी गेट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी एज ए डैश बी डैश which is real, inverted and as the same size as that of object. और तो हो गया, साइज एकदम सेम रहती है, रियल रहता है, इन्वर्टेड रहता है. पोजीशन क्या है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन गया. ये सब थोड़ा ध्यान से समझना, ये सब कभी क्वेश्चन में इससे रिलेटेड करके पूछ लिया जाता है, ठीक है. तो ऐसे तुमको बता देगा कि एक ऑब्जेक्ट को रखा गया, उसके हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिला, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तुमको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिला, ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया?
तुम्हें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बता दिया, मान लो यू बता दिया कि ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस इतनी है, और उसकी इमेज ऐसे मिली इस एकदम उसके बराबर साइज की है और बराबर साइज की, ऐसे बोल एकदम उसके बराबर साइज की। इसका मतलब समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट जो u है, u की डिस्टेंस है, एक्चुअली वो क्या इनडायरेक्टली सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर लो तो फोकल लेंथ मिल जाती है, तो इनडायरेक्टली उनको फोकल लेंथ बता दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन करना समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट एट फोकस, अब ऑब्जेक्ट फोकस रखेंगे या फोकस रखेंगे, देखो इस तरह से, अब यहाँ रूल समझ लेना। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे होंगी क्या दोनों पैरेलल हो जाएंगी, जब दोनों पैरेलल हो जाएंगी तो दोनों को किधर भी प्रोड्यूस करने पे पैरेलल रेज है, दोनों को किधर भी प्रोड्यूस करेंगे तो कभी नहीं मिलने वाले। लेकिन हम मानते हैं कि ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद एट अ ग्रेट डिस्टेंस, मतलब इन्फिनिटी पे जाकर वो क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इन्फिनिटी पे जब जाकर मिल जाएंगी तो मान लो अगर इन्फिनिटी यहाँ पे होता, मान लेते हैं ऐसे इतना छोटा डिस्टेंस नहीं होता, तो देखो इमेज की साइज इतनी बड़ी बनती है। अगर इन्फिनिटी और ज़्यादा आगे होता, मान लेते इस पॉइंट होता, तो देखो इमेज की साइज कितनी बड़ी बन रही है। इसका मतलब जब इन्फिनिटी इमेज बनेगी तो साइज ऑफ इमेज क्या होगी, एक्सट्रीमली लार्ज, क्या होगी, इन लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज होगी, इन लार्ज होगी। ठीक है, तो एक्सट्रीमली लार्ज होगी, एट इन्फिनिटी होगी। जब हम मान ही रहे हैं किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें एक बार मैं पढ़ा चुका, लेकिन वीडियो पॉज हो गया था, फिर से पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। अब जब फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो मान लो ऑब्जेक्ट ए इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, देन वी गेट इमेज ऑफ ए बी एज ए डैश बी डैश बिहाइंड द मिरर। अब यहाँ पे देखो फिर से वो सब लगा लेना, एक पैरेलल गया, पैरेलल के बाद फोकस से गुजरा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लौट गया। अब दोनों लाइट पैरेलल तो है नहीं, यहाँ पे देखो जैसे बढ़ाते जाओगे प्रोड्यूस करो, दोनों की डिस्टेंस बढ़ रही, तो डिस्टेंस बढ़ रही तो मतलब दूसरी तरफ डिस्टेंस घट रही होगी, इधर बढ़ रही मतलब कभी इधर मिलेगी तो है नहीं, लेकिन पीछे तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो मिलेगी। जिस पीछे तरफ प्रोड्यूस करते गए डिस्टेंस कम होती गई तो कहीं एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर जाएंगे दोनों लाइन, वही पॉइंट हो जाएगा बी डैश हो जाएगा, बी डैश से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो हो जाएगा बी ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, इसका इमेज हो जाएगा। तो इमेज कैसे बनेगी, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट है, बिकॉज ये बिहाइंड द मिरर है तो ये वर्चुअल इमेज है, बिकॉज ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट इस पॉइंट से होती हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअली हमारी जो आंख होती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को ट्रेस करती है उसके पास, तो हमारी आंख को लगता है कि लाइट यहाँ से आ रहा है, तो लाइट हमारी आंख को क्या लगेगा कि ये जो है लाइट रे इस पॉइंट से आ रही है, तो वही हमारे पॉइंट को उस पॉइंट वो पॉइंट हमारे आंख को इमेज जैसा दिखाई देगा, वही इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है। साइज की बात करें तो ये लार्ज होगी, लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल है, इरेक्ट है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। और क्या बात हो गई, नेचर हो गया वर्चुअल, इरेक्ट, साइज हो गया लार्जर देन, हाँ पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, राइट। तो यू वी और एफ, यू मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, पोल से, तो हमें बार बार पोल नहीं बोलना है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज और फोकल लेंथ। ठीक है, ओके, अगले वीडियो में देखते हैं कुछ आगे की बातें। थैंक यू।